Good morning, student. I am Rajendra Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome back in this online session of class 6 maths. Yesterday, we discussed about the introduction part of unit number 1 that is related with the number system, and I explaining everything into the unit number 1, so you can also see the first two pages of your supplementary book, and whenever it required you can also use this the NCERT book, those you have to collect from the school. But some of the things are I also included today's whatever the things we discussed yesterday in the previous lecture, just we have to carry forward in this lecture. So you have to use this particular videos to understand about the number system. So let us start with these things and rapidly we gone through understands about the various number, and we also knowing about that how can we say that it's a particular numbers and this numbers is categorized under which systems and everything. So let us start with it. At the end of these sessions I also provided some homeworks related with the today's lecture, and you also focused on it. Whatever the things we discussed, that is a part and parcel of unit number 1, and everything whatever the parts of the practice questions, that all practice questions you have to write in your fair book. So you have to parallel make your fair book. Keep this supplementary book within you, and pen and book, these three things always keep with you whenever you attend any lectures of these things. So let us start with it. So, understandings about the numbers. Just we rapidly gone through this SB1 parts. Understanding numbers is there. How can we say that? Yesterday also discussed about the some systems and place values and representing numbers and commas and everything. So, how we can represent any huge number, or if we put it in the previous classes, that is some systems of the numbers like Indian systems and international systems. Both systems are implemented over here, and among them, uh, whatever the numbers we represent, either we put into the comma, that is very easy to read any huge number. That all kinds of the things we discussed into the previous lecture. So let us move on to the same thing with into the descriptions part. So read the following here given three examples, and we directly read like that. I had a two rotis today. My brother had four. So here use two numbers over here. I had two rotis today, and my brother had four. The second one is that there are six books on the desk, and the third statement is represent here. There are zero books in this box. आप तीनों तीन चीज का पिक्चर देख सकते हो और उसमें से you have to make a particular sentence of it. Now, what to do here? So, what do these numbers represent here? 2 and 4 has 6 has 0 है. It can be represent the place values over here like that. This number represents the quantities. तो ये सभी numbers आपको क्या represent कर रहे हैं? Quantities जो आपके pictures में दिख रही है. Pictures में two rotis दिख रही है. Then we can also using the books on the desk. How many books are there? And in the box there is no any kind of the books over there. So these all things we represents. So number always represents the quantities. So let us move on it to represent quantities. We have 10 digits. हम कल भी ये चीज explain कर चुके हैं. Just we rapidly gone through. 0 से 9 ले, 0 से 9 को काउंट कीजिए तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. How many numbers over there? So there are 10 digits over there to represent the quantity. तो हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 0 से लेके 9 नंबर तक है.
तो ये क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रिप्रेजेंट करने का नंबर से 0 to 9, that we all know that from the previous classes, so there is nothing too hard inside, just we recalling it. So second thing is, to represent quantity we have 10 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to 6, 7, 8 and 9. So after 9 we do not use new digit. 9 digit के बाद हम किसी भी digit का use नहीं कर सकते, because of it's a combination of 0 and 9 whenever we required that. So up to the 9 digits we can use. So we use place value to show larger quantity. यदि हमें larger quantity को डिस्प्ले करना है, तभी हम इस प्लेस वैल्यू को हम यूज करेंगे. सो दिस आर द ऑल 10 digits. It's our one kind of the place values over there. How can we represent it? So these things you keep in mind, that now we have using after these things. तो आपको ये आइडिया आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या है. कोई भी डिजिट से वो 0 से 9 लिख के है, और if we want to show a larger quantity, at that time we are using this place values. So let us move on to the next point. Now second concepts I explained in the previous, that is reading and representing the place value, that is available into the SB2 supplementary part 2, supplementary part 2 in page number 2. So reading, how to read and how to represent the different place values over there. So let us getting the concepts from here. Why do we need place values? Why do we need, क्यों हमें ज़रूरत है place value की? So we can say that we cannot have new digit to represent a larger quantity. हमें ज़रूरत नहीं है जब हमें न्यू डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है. सो वी कैन नॉट हैव न्यू डिजिट. हमारे पास जब न्यू डिजिट नहीं होती, मतलब 0 से 9 के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता, दैट टाइम वी आर यूजिंग the some larger quantities over there. That time we cannot have new digit to represent larger quantity. That time we need the place values. Second point is there, instead of inventing new digits to represent larger quantities, we use the place values. So कभी हम न्यू डिजिट्स इन्वेंट करते, मतलब फाइंड करते हैं, हमारे पास ऐसे डिजिट्स आ जाती है, ये सब चीज़ जब हम करते हैं और जब हम लार्जर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस प्लेस वैल्यूज. And third point is that place value help us represent number using the digits 0, 1, 2, 3 up to the 9. तो हमें हमारी प्लेस वैल्यू सिर्फ इसी नंबर में से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 to 9. तो these are the points why we need place values over here. Next point is that these are the place value systems, and in the previous lecture also we discussed, and in the bridge course also discussed that the place value system has the place ones. यहाँ से starts होता है ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and 10 crores. So these all are, you are knowing about that. So you also using from the supplementary SB2, your part 1, from those you are keep with you, that is your supplementary book में से भी आप देख सकते हो. वही चीज़ मैंने कल एक्सप्लेन की थी, वही चीज़ फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं. So these are the place value systems over, and this is the place value table. आप place value table को refer कर सकते हैं. Now representing the value of quantity using place values. The price of a car is 9,55,000. अब किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू, मतलब कोई किसी को भी हमें किसी क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है, तब कोई नंबर से हम करेंगे, और उसी नंबर में हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, प्लेस वैल्यू की. सो लेट अस रिप्रेजेंट द वैल्यू इज नंबर. अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि 9 लाख, वर्डिंग में दिया गया है 9,55,000. So that things we have to represent into the number. Suppose 9 lakh hai. So we have to put like that 9 lakh, and then after
55,000 is there. So 9,55,000, that is a systems we have to implement it in Indian system. तो यही चीज हमें रिप्रेजेंट करते जाना है. कैसे करेंगे? लाइक दैट वे. बट वी ऑलवेज हैव द प्रैक्टिस दिस नंबर्स वी पुट इनटू द परफेक्ट प्लेस वैल्यू टेबल. तो ये हमारा प्लेस वैल्यू टेबल है और उसी में हम रखेंगे कि कहाँ से हमारा पीरियड स्टार्ट्स होता है. तो हमें पता है कि ये पूरा चीज़ जो है, ये जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसमें से पहला ये जो पीरियड, ये जो तीन चार पीरियड आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों चार वन ऑफ द पीरियड्स ओवर थे. So that things we observed it, and then after we write a number under these place values. So write the numbers of each place in the place value box over here, and that we know. So let us move on to the next things is that, so after putting these numbers into the place value box, we write these numbers as 9 lakh. अभी मैंने आपको बताया कि कैसे उसको लिखते हैं. After plotting a number into the place value box, place value table, that time afterwards it we can write like that 9 lakh, 9 के बाद comma, 55 के बाद comma, 000. Originally that comma is putted from the right side. राइट साइड से आप स्टार्ट करो तो पहले इंडियन सिस्टम में थ्री डिजिट्स, देन टू डिजिट, देन टू डिजिट, सो ऑन. So like that way we represent. Now let us find the quantities of a number using place value of its digit. अब let us find the quantity of 7,56,980 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें. So write the digit in the table starting from the ones place. ones place से हम स्टार्ट करेंगे उसी नंबर को. तो ones place में 0 है. We can represent again, we can say that 0, then 8, then 9, 6, 5 and 7. So these all are the numbers we representing over here. So write the digit in the table starting from the ones place. हमें कहाँ से वो नंबर लिखना है प्लेस टेबल्स के अंदर, वो प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर हमें ऑलवेज वी राइट अ नंबर फ्रॉम द राइट साइड. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. यदि हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल द नंबर्स इज रिसाइड्स इनटू द टेबल, टेबल में हो जाएगा. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. सेकंड चीज, we can read the quantity of the number is 7,56,980. After putting that number into place value table, we can read that number from the left side. हमें कहाँ से बोलना है? जो जिसकी पोजीशन है वहां से हमें बोलना है. 7 किस प्लेस वैल्यू की पोजीशन पे है? लैख की पोजीशन. सो वी कैन रीड लाइक 7, then 10,000, that is 5, and 1,000, that is 6. So 56,000 we have to combinedly read. So 7,56,000 and again 980. So that is a 980. So this is a number we can directly read. नेक्स्ट पीरियड्स एंड प्लेस. जो अभी मैंने बताया आपको कि पीरियड्स क्या होता है. आप देख सकते हो कि तीनों को मिला दो. ये वंस, टेंस एंड हंड्रेड, इसको वंस पीरियड्स बोलते हैं. 1,000 टेंस को मिला दो, ये दोनों को मिला दो तो दैट इज बिकम्स अ थाउजेंड्स. 10 एंड लाख, ये दोनों को मिला दो, दैट इज कंसिडर्ड एज ए लाख. And 10 crores and crores, that becomes a crore. So there are 4 different periods available in this place value box. So places are grouped into the periods, and the periods that we use are as this kinds of the following manners. Is it clear? तो ये चीज भी आपको याद रखना है. So you can also remember periods and places, all these things, and you can also knowing about that which things we have to represent as a period and which things we have to represent as a place. So these are the periods and place. Now periods and place we just put it into the numbers like
if gets difficult to read a large number when it's written like that 91111 like that, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर आए, वी कांट बी एबल टू रीड डायरेक्टली, दैट टाइम वी हैव टू फोकस ऑन अनदर थिंग्स। किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? तभी हमें कोमास के ऊपर फिक्स करना चाहिए। इन सच केसेस वी राइट द नंबर बाय प्लेसिंग ए कोमा आफ्टर ईच पीरियड। तो जो जो पीरियड से आपका पहला पीरियड वन से, तो वंस में जितने भी प्लेस वैल्यू है उसके बाद हम कॉमा करेंगे। थाउजेंड में टू डिजिट्स है, दैट आफ्टर वी पुट द कॉमा। लैक्स में टू डिजिट है, दैट आफ्टर वी पुट द कॉमास। एंड क्रोर्स में भी दो नंबर्स आ सकते हैं मैक्सिमम। सो द नंबर इज रीड एज 1 crore 11,11,119. So that's way we directly read. So how can it becomes easier? Once we have to put a comma in between the each period. जब हम हर एक पीरियड के बीच में कॉमा रखते हैं, that time we easily read that numbers. Is it okay? So this is the period and places, how to put the use of the commas, everything we explained here. Next thing is that this is a quick tips over here, that start counting. Here given that 1, 11, 11, 119. That way we have to represent here. So we can also using like start counting the digit from the ones place. आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? काउंट कहाँ से करेंगे? वंस प्लेस के ऊपर से काउंट करेंगे। 911 ऐसा आपने काउंट कर दिया, 1 2 3, ओके। सो प्लेस द फर्स्ट कॉमा आफ्टर थ्री प्लेसेस। जैसे थ्री प्लेस खत्म हो गया, यहाँ पे आपने कॉमाज रख दिया। सो प्लेस द फर्स्ट कॉमाज आफ्टर थ्री प्लेसेस। देन आफ्टर द प्लेस अ कॉमा आफ्टर एवरी टू प्लेसेस। 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, देन इट्स ओवर हियर। समझ में आ रहा है ना कि हम स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। वंस प्लेस में पहली चीज प्लेस द फर्स्ट कॉमा आफ्टर थ्री डिजिट्स और थ्री प्लेसेस। देन आफ्टर प्लेस ए कॉमा आफ्टर एवरी टू प्लेसेस। तो दिस आर द थ्री easy tips, quick tips to place or to put a comma between the each periods. Is it clear now? Okay, so let us move on to the another points to remember over here. Always points always place the commas from the right to left after every period. हमें कैसे कॉमास पुट करना है? फ्रॉम राइट, यहाँ से हमें स्टार्ट, आपके नंबर के सामने की मतलब राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की ओर जाएंगे। व्हेन ऑलवेज प्लेस द कॉमास। सो फर्स्ट थिंग्स यू ऑलवेज बी रिमेंबर दैट आपको जब भी कॉमा रिप्रेजेंट करना है तब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। और सेकंड चीज, ऑलवेज रीड ए नंबर इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें कैसे करना है ये नंबर? जब हम रीड करते हैं तब हम लेफ्ट से राइट की ओर रीड करेंगे। सो 44 crore 45 lakh 60,000। So these are the way to represent, to read a number, or these are the way for putting a comma in each and every periods. Is it clear? तो ये हो गया पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये चीज खास आप याद रखेंगे कि क्या क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज हर एक पूरी वीडियोस में से ये सब चीज अपने माइंड में सेट कर लेना। अब हम क्या सीख चुके हैं? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट दिस क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। राइट द गिवन नंबर्स बाय प्लेसिंग कॉमास आफ्टर ईच पीरियड। तो आपको क्या करना है? ये दोनों नंबर है वो आपको सिर्फ कॉमास पुट करने हैं। सो जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। 347529000। तो अब ऐसा ही एक नंबर ले लो कि 347529000। अब यही चीज आप प्लेस वैल्यू टेबल में रखेंगे पहले,
और स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, यहाँ से राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। सो दिस आर द कंसिडर एज 3,47,52,900। अब हम बोलेंगे कहाँ से, रीड कहाँ से करेंगे, राइट साइड की ओर, और जब हम कॉमा रखेंगे वो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड की ओर। समझ में आ रहा है ना। सो दिस आर द 3,47,52,900, ऐसे हमने रख दिया, बट हाउ कैन वी रीड इट, 3,47,52,900, is it okay? So these are the understandings how to represent it like that way. This is the answer of both numbers, एंड ऑल्सो भी यूजिंग दैट, आप यही नंबर को कैसे बोल सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, दैट इज द आंसर गिवन फॉर ए एंड बी, 3,47,52,900, 65,78,409. So these are the way to represent it. Now move on to the next point. Now, this is after using the Indian system, this is the international system of numeration, same way, but little bit some changes into the international system. Just we have to check it out, international system, how to represent it. The place value system that we have learned so far is called the Indian system of numeration. It is used mainly in India. That is consider, and that is also refer the योर सप्लीमेंट्री बुक के सेकंड पेज में से आप इंटरनेशनल सिस्टम्स का प्लेस वैल्यू टेबल देख सकते हो. दिस बेसिकली यूज्ड वॉट एवर द इंडियन सिस्टम्स आर देयर. तो हमने इंडियन सिस्टम्स को तो मेंशन कर दिया, अब हम आगे बढ़ रहे, दैट इज कंसिडर एज अ इंटरनेशनल सिस्टम. सो जस्ट वी चेक इट आउट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन that is considered into the other countries, another systems of the numeration, that is known as the international system. So some place and periods in these systems are the different. Let us learn about the international systems over here. This is the purely international systems of the numeration as the periods, ones, thousands, and millions. So you can also write down this international system of the numeration from the SB3. तो SB2 के ऊपर आपका इंडियन सिस्टम था, अब SB3 यानी थर्ड पेज के ऊपर आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन है. यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द डायरेक्टली टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू राइट दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन. सो वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, तीनों तीन चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. वंस, टेंस एंड हंड्रेड, वंस के पीरियड में वंस, टेंस एंड हंड्रेड है. थाउजेंड्स में और तीन प्लेस है, 1,000, 10,000 एंड 100,000. दिस थिंग्स इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर. एंड मिलियंस में मिलियंस, 10 millions एंड 100 millions वी हैव टू यूज. टोटल हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्लेसेस होने चाहिए, पहले ही हमने बता दिया कि प्लेसेस टोटल 0 से 9, मतलब 9 प्लेसेस ही होंगे सभी में. तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी 9 places है. तो these are the difference between Indian system and international system. Now let us represent like Indian systems into the international systems, like one numbers 111. So international system of the numeration also starts from the left side 9111. ऐसे हम यहाँ से ही start करेंगे और add करते जाएंगे like that way. Okay, so starts from the 9 and we can recall these things as a international system. Now it is written like that way. अब आप देख सकते हो वंस में जो लास्ट नंबर है यहाँ पे आपको गिवन है 911, तो यहाँ पे कॉमा है वो 3 डिजिट्स, लाइक इन इंडियन सिस्टम की तरह ही यहाँ पे भी फर्स्ट 3 डिजिट के बाद लास्ट 3, मतलब राइट साइड से जब आप मूव होंगे तब 911 यानी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा होगा. और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में यही चेंज है
के बाद में हर एक थ्री, पहले थ्री, बाद में वन टू थ्री, फिर कॉमा आया, फिर 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे हर 3 डिजिट के बाद कॉमा को पुट करना है। सो इट इज रीड एज 11 मिलियन। आप देख सकते हो कि 11 को कंसीडर कर लो तो एक पूरा पीरियड मिलियन का है, एक पूरा पीरियड थाउजेंड का है, और एक पूरा पीरियड वंस का है। सो वी कैन पुट लाइक 11 मिलियन, 11,111,000, 111,119. That way we have to read it. Okay, so this is the international systems, how to represent, how to put, or how to read it. So from the right we place a commas after 3 places. अब देख सकते हो कि ये तीनों तीन चीज यहाँ पे मेंशन कर ली है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्रॉम द राइट वी प्लेस अ कॉमा आफ्टर 3 places. एंड इंडियन वर्सेस द इंटरनेशनल सिस्टम्स, उसमें आप देख सकते हो कि 3 places, 2 places, एंड यहाँ पे ऊपर की साइड आपको दिख रहा है वो इंडियन सिस्टम है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है दैट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स में आप देख सकते हो दोनों को कंपेयर करो एक ही नंबर के ऊपर, जो यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो उस नंबर को हम 3 places, 2 places, 2 places, 2 places, that way into the Indian systems, while in international systems that is 3 place, 3 place, 3 place, like the डाउन साइड। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करेंगे पूरे एक नंबर को दोनों सिस्टम में कैसे रखते हैं, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स। ओके, सो आई होप दिस थिंग्स वेरी इजीली कीप इन योर माइंड। Now, composition of Indian and international systems, we can say that lakhs and 100,000. So, Indian system, it should be considered as a 1 lakh, and in international system, that is considered as 100,000. So, how can we represent 10 lakh and 1 crores? That we let us move on it. So, 10 lakh, that should be considered as a 1 million. 10 लाख को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मिलियन, और 1 करोड़ को कैसे मिलियन करेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 मिलियन। सो दैट कॉम्पोजिशंस ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड। 10 करोड़ को हम फिर से 100 मिलियंस बोलेंगे। तो ये चीज है कॉम्पोजिशंस का कंपैरिजन जब हम करते हैं तब नंबर्स को हम याद रखेंगे। So write the numbers this in Indian and international system of the numerations in your book. So you have to write this into the homework. आज के होमवर्क में ये आपको करना है कि राइट द नंबर टू, जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है वो इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में आपको लिखना है, स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर टेबल और प्लेस वैल्यू टेबल में अलग अलग आपको लिखना है, और जैसे ही लिखते हो विथ कॉमा यू हैव टू रिप्रेजेंट इट। ओके, so this is the homework now. So another last one we given at the conclude of this topic, I given to the two numbers into the homework. Both numbers you have to displayed or put into the both systems. So using the both systems, Indian systems and international systems, you have to write or you have to give the names in wording. Okay, so both numbers just I given here. First number is 666635000. That numbers you have to represent with both the system, दोनों सिस्टम से, with the commas, periods and put into the place value box, and give the read the name, read the numbers with the wording. So wording से आपको description से भी numbers name लिखना है, or you can also represent into the place value box. Second number is 33005632. This both numbers you have to represent into the using the international systems as well as Indian system.
तो आपको टोटल 4 बॉक्सेस बनाने हैं, इंडियन सिस्टम्स के दो, दोनों नंबर के, और इंटरनेशनल सिस्टम्स के दोनों। तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, यही नंबर्स। इज इट क्लियर? आई होप everyone has finished these things and you understood about all the concept. You can also refer the SB3 from your supplementary book. Supplementary book का 3rd पेज है, वो आज रिफर करना है, और साथ में ये होमवर्क, ये दोनों नंबर्स को आप दोनों सिस्टम से रिप्रेजेंट करना है। Is it clear? So I hope you staying with us. So you watched carefully. If you not understand, you can also rewind this video. And if you're having any kind of the query, then you ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.